first thing... sorry, I'll just keep translating the image. The first reason that I came here is to offer my apologies as a citizen of the United States for what my country has done to your lives. And that is a very small thing, but it is what I can do. हम भी अर्ज करते हैं कि बहैसियत ये कि अमरीकी हमारे हम आप सारे अमरीकी को बचाए ओबामा की जो पॉलिसी है या CIA वाले जो पॉलिसी अख्तियार करते हैं वो ऐसे पहले उसका पॉलिसी इसी कराए कि 100 साल तक इसमें कत्ल किए जितने का मुसलमानों को अफगानिस्तानियों को कत्ल करते हैं वह अमरीकी आवाम से बहुत ज़्यादा नफरत पैदा करते हैं। हम इसके आवाम से अपील करते हैं वो अपने हुकूमत को बार बार कहे और उस पर बोल रहे कि मजीद जो जुल्म आपने रवा रखा है ये बंद करें। So I'll just translate. He's saying that I would ask you to convey this to American public that what Obama and his CIA is doing to us in North Waziristan is actually making us enemies of America, and this will not, even if it goes over 100 years, it will not stop. We just ask you to tell the American public that they need to stop their president and CIA from stopping what they are doing. That is why we are here. Secondly, I would like to ask you gentlemen, if you had a drone, what would you do with it? Can you give it up to us? I think, let me ask the victim families first what they would like to do, and then the money. I'm just telling them, say freely whatever you feel like. I might take it over the White House. सब ये कहेंगे कि हम अगर हमारे साथ गुना जरूर तो हम अमरीकी आवाम पर नहीं हैं और CIA के एजेंट और खुसूसन ओबामा व्हाइट हाउस पर जरूर मिसाइल बरसाएंगे। So he's saying that if we have drones, we will not target American public, but we will target CIA and White House. That's what Victor is saying. Don't get us mixed up with that. So let's see, show of hands. My name is Paki Wieland. I'm from Massachusetts. And I just wanted to know that we're here protesting with the people of Pakistan against the drones. But in the United States, we are representing many people from the United States who can't be here but are with us in spirit and who are protesting at bases where the drones are orchestrated from. And we will continue when we get back to do everything in our power to stop the drones because we will not have them flying in our names. ड्रोन जहाँ से उड़ता है या कंट्रोल होता है उस जगह को भी हम वहाँ जाके भी हम काफ़ी शरीर हो जा सकते सिर्फ हम आपको दो तीन दफा अमेरिका मुझे जिसने जज किया रहने के अंदर 2-3 दफा अमेरिका में व्हाइट हाउस जिसके सामने कर्नाटक के खिलाफ एहतजाज हुआ। हम उन लोगों का भी ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने ना हमारे गाँव देखे ना हमारे बच्चे देखे फिर भी हम उसने He's saying that very thankful for that, and I'm aware that at least on 2-3 occasions when people protested outside White House as well against drones, and I'm really thankful that people who
haven't met us or seen our family and how we are and what we are, but they still stood for our rights, and I'm really thankful for that. I'm Joe Lombardo, and I'm from New York. I want to tell you that on Sunday, which is the 11th anniversary of the U.S. invasion of Afghanistan, there will be demonstrations all across the United States, and they will all raise the question of the drones in Afghanistan and in Pakistan. Just translate that bit. वो कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर को जो अमेरिका के अफगानिस्तान जो हमले की तारीख है, उस दिन पूरे अमेरिका में एहतजाज होगा अफगानिस्तान के ऊपर हमले के हुए, उसमें ड्रोन भी के ऊपर सब लोग एहतजाज करेंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। I just want to ask you if there's anything else that you would like us to, when we go back and do. You mentioned the White House. I have been arrested in front of the White House protesting the drones. There's many people here who have been arrested at drone bases protesting the drones. Is there anything else you can tell us that you would like us to do when we go back to help the cause? ये कहते हैं कि मैं भी व्हाइट हाउस के सामने इजहार करते हुए अरेस्ट हुआ हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार गिरफ्तार भी होते हैं, कभी व्हाइट हाउस के सामने इजहार करते हैं, कभी ड्रोन न्यूज़ के सामने इजहार करते हैं। आप हमें बताएं उसके अलावा हम वहाँ पे अपने मुल्क में क्या कर सकते हैं, आपकी चीज़ को वहाँ पे रोशन कर सकते हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं तो अमरीकी आवाम को सिर्फ हमारे आवाज़ पहुँचाए कि ओबामा इंतजामिया या रिपब्लिकन कांग्रेस सब ने जो पॉलिसी उसने इख्तियार करी है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं है, वो खुद दहशतगर्दी कर रहे हैं और अमरीकी आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। He said that what I want you to convey to people in America is that you continue your protest and you continue against the policy of Obama administration and or even if it's Republican administration, just tell them that this is an injustice in which they are doing this. ताकि हम दोबारा सर लोगों का और जितने ममालिक के लोग आए हैं सारे अफ्रीकन इसलिए I would like to thank all the countries who are being represented here. So they are all Americans. I think there's one Canadian. सबको हम खुशामदीद और अफगानिस्तानी अवाम की तरफ से उसको हरस करते हैं, हमारे बाल बच्चों की तरफ से, हमारे माए बहनों की तरफ से हम इनको हरस करते हैं कि जब आप अमेरिका चले जाए तो मस्जिद उसको रोकने में अहम किरदार अदा करे और ओबामा इंतजामिया को कह दे, CIA वाले को कह दे, मैं गुलाम पनेटा को कह दे कि जितने लोगों का आपने कत्ल किया बस ये भी तुम्हारे लिए काफ़ी है और मजीद अमरीकन के लिए खतरा पैदा नहीं है। When you go back, we just want you to convey to your Obama administration, Mullen or Petros, whoever it is, just tell them that it's enough. You have killed enough people. That's enough for you. Just please stop this. You also mentioned Leon Panetta. Yes, all the, Yeah, we heard that. all the evil people in the U.S. Pam? Yeah, I'm Pam from Washington, D.C. There was an article that appeared in Reuters this last couple of days that was criticizing our work to some extent because for emphasizing drones too much, bringing up the point that a lot of the problems in the Fatah region is also due to the neglect by the Pakistani government and the violence brought by the Taliban. And I was sort of curious, I was hoping they could put that in perspective for me. उनका ये कहना है कि फाटा में जितनी जुर्म हो रहा है वो जुर्म की वजह से नहीं हो रहा, वो वहाँ के जो हालात हैं जिस तरह के सिस्टम में लोगों को रखा गया है उसकी वजह से उसको और
ड्रोन का आपस में कैसे बात करें? नहीं हमारे जो रिवाज है हमारे फाटक में, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी काम से हमारा रिवाज तो मुख्तलिफ है। हम फाटक है इतना खुशगवार जिंदगी मैंने कभी सारी दुनिया में नहीं देखी जैसे कि फाटक है खुसूसन वज़ीरिस्तान में। अब वहाँ पर हालात जो हालात पैदा किए हैं वो सारे डोनाटिक से अमरीका ने पैदा किए हैं, क्योंकि लोग परेशान है, सख्त मुब्तला है, परेशान मिस हो जाएगा। He's saying like that this is totally wrong, that what life we were living before drones was completely different, it was in all harmony. We are proud of our riwaj, which means customs, and the way we live our life. I have never seen such peaceful life anywhere in the world other than Fata where we were, but whatever is happening is since drones. Whatever situation we are in now is since drones. So I don't think this is right analysis drawn by our team. They speak through their mothers. So we've got Billy, Sushila, Leah, and Judy. My name is Billy Kelly from New York. I understand you are the Waziri people from the Pashtun, and that is in Afghanistan and are there many Pashtun fighters going from Pakistan into Afghanistan or and coming back? जिस वक्त से तकरीबन 2010 से जब तक अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और हमारे पाक फौज सारे मुद्दे हमारे फौज निश्चित कर दिए हैं। ये सच है कि वहाँ उसी साइड भी प्रधान है और इसी साइड भी प्रधान है, लेकिन पाकिस्तानी फौज में इस पर खतरनाक नारे लगाया है और न वहाँ को हम अफगानिस्तान ढूंढते हैं कि हम अपने लोगों से मुलाकात करते हैं या वहाँ से ये सब सफेद जो है It's a white lie, but whatever this is being told that there are people coming from that side or going from this side. Since 9/11, Pakistani military is present in that area. They have pretty much fenced the borders, the crossing which we had before, and this is not true. We can't even go and visit our relatives anymore. We don't do that. That area is heavily monitored. We don't buy this that there is a cross-border. It's true that there are questions on both sides, but since 9/11, things haven't been the same as they used to be before as we travel. Just one quick, during the fight against the Russians in Afghanistan, the Pashtun people participate in that to fight against the Russians? तो कह रहे हैं कि जब वहाँ पे सारी मीटिंग में अफगानिस्तान तब इस इलाके के पश्चिमी लोगों ने वहाँ शिकूरियत की थी इस्लाम के अंदर इराक जो हुआ था वो भी तो CIA तो ये पूछ रहे हैं कि उसमें बताओ CIA के साथ मिलकर वहाँ जाने की जब रूस है हाँ अमरीका हमारे साथ है। अमरीका हम मुझे असला दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे कि रूस के साथ जब रूस को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अमरीका ने अपना मकसद पूरा कर दिया, अब अमरीका हम पर हम देगा अपना बोलता है। He said, yes, of course, that time Americans were with us. They were telling us that we have to fight against the Russians. And now that we have been able to disseminate the USSR, now they are attacking us. लेकिन अफसोस इस बात की कि उसी वक्त हम अमरीका ने हमको मुजाहिदीन के इक़्तिदार और अभी तक कर दिए। He says the only difference is that, and which is a pity or sad thing to say, that at that time we were mujahideens and now we are terrorists. My name is Sheila Cherian, and I'm from Florida, United States. And I joined with Barbara with their apologies to you and the people
promise to you, Malik Jalal, and to your people, that when I get back home, I will publicize this in our churches, in our schools, the high schools, and in our civic centers. I will do that with pictures and with videos to bring your story to our people. I promise you this. And on a very lighter note, I would like to know about your headdresses, whether the type of headdress signifies your seniority in your particular tribe. देखिए ससुराल का काम वो मैं भी पार्टी को मुख्यमंत्री हूँ मैं क्या तो मैं भी मास्टर से उसका ये है कि मैं यकीन दिलाते हैं कि मैं फोकस जाऊँगी मैं चाहे वहाँ चर्च है स्कूल है सिविक सेंटर है जिस तरह हमारा जगह होता है इस तरह हमारा सिविक सेंटर है उसमें भी जहाँ जहाँ भी जाऊँगी मैं हर जगह यहाँ से जो मैं तस्वीरें लेके जाऊँगी आपसे बात करके जाऊँगी इस तरह मैं वहाँ पे पूरी तरह से प्रचार करूँगी लोगों को बताऊँगी अमेरिका के सामने लेकिन मेरा सवाल जो है वो उससे मुख्तलिफ है आपने जो मुख्तलिफ रंग की पगड़ियाँ पहनी हुई हैं इसका क्या मतलब होता है ये पूरी जिस तरह बलक है उसकी लग पड़ रही है आम आदमी उसकी पगड़ी अलग है इसका साइज बड़ा है ये क्या है ये सारे हमारे पाकिस्तान पसंद पश्तून पठान का ये रिवाज है और तकरीबन सब जैसे ये रिवाज आ रहे हैं ये सारे के सारे छोटे He's spoken like a true leader. He says it's just part of our custom. It's not a difference of big or smaller. It's all same people. It's just some people wear it big and some people wear it small. But I think he's being modest as he's the bigger Malik, so he's wearing a big one and the other one is wearing small. So we have moving down the line, Leah and then Jude. My name is Leah Walter. I live in Oregon, in the United States, and my question is, obviously we're very, very concerned about the deaths that we have heard about, and we're very, very concerned about the psychological torture of the warfare here in the drones. But today you mentioned something that I had not heard about before, and that is suicide. And I am very troubled by that. And can you tell me, is this very unusual for your culture to have suicide? हम ये सुनते रहते हैं निकाले भी पढ़ने को मिलता रहता है कि ड्रोन की वजह से लोगों की शादी हो रही है बच्चे मर रहे हैं नफसियाती अमराज फैलाव हो रहा है सब चीज़ें हो रही है लेकिन ये जो चीज़ आपने अभी बयान की है खुदकशी हो रही है इसके ऊपर मैं जरा बताइए कि हमने इससे पहले कभी ये नहीं सुना कि खुदकशी हम लोग कर रहे हैं तो ये बताएं कि आपके कल्चर में रिवाज में खुदकशी नॉर्मल है या ये बड़ी अजीब सी बात है? नहीं ये सारे ड्रोन की वजह से तो सर ये सारे ड्रोन की वजह से ऐसे होते हैं और कोई वाक्य ना पहले ऐसा वाक्य ना हुआ है ना अभी इंसान जब दोनों अधिक बन जाए तो ये खुदकशी नहीं होगी लेकिन इसके दिमाग में काम हो जाए क्योंकि हर रोज छुट्टी घंटे 4-5 बलूचिस्तान में हर जगह 4-5 ड्रोन तैयार हुआ Simply because of the drones, there has never been such a trend in our society before. There will never be again. It's just that continuous hovering of drones over their head, and it's not just one drone at a time, it's 4 or 5 drones hovering over, and that has really stopped the youth from thinking process, and they just take on their own lives. Hi, I'm very honored that you would come and speak with us and tell your story to us and explain to us your life. And I want to say that I was with a group who got arrested at a base of a large group of people all at once in a fairly small town, and there's other people in here that were with me. When we went to make our statement, we brought pictures of the boy Tariq Aziz because it was very shortly after the strike that actually killed him, and that was my statement to the judge as to why I was there. I wondered if you can give some sense of two things. One is if you can give some sense of how people's lives are affected on a daily basis
by the situation of having to live in fear in their own town and village. And also, again, on a lighter note, I saw that I'm a student of maps and visualizing the space that you live in. And I've seen the maps of the strikes, and I was wondering what town or village you live in, and how that orients. I will forget all this. Yeah. So you can ask the second question after he answers the first one. Oh, I'm sorry. और दूसरा ये है कि आप लोग को दो चीज़ें पूछना चाह रही है एक चीज़ में शुरू की है या फिर चीज़ को मजबूर होने की कोशिश की तो पहली चीज़ ये है कि वहाँ ये बताइए कि आप ज़ाते ज़िंदगी को कल तुमने अपने बारे में बताया कि किस तरह से ये लोग तारे की तस्वीरें लेके वहाँ पे कोर्ट में कैसे सामने जाकर खड़े हो गए कि हमारी कोर्ट ये बच्चे मारी तारे की तस्वीर पे शुरू बच्चा राजनीति में शेख हो गया मिलिट्री के पास वो उसको मैंने किया है लेकिन हम वहाँ से दूसरे आपकी जो डेली ज़िंदगी है यानी कि रोज़मर्रा के हालात हैं वो कैसे मुतासर होते हैं आपका जो रोज़मर्रा की रूटीन है उसमें क्या फ़र्क आया पहले तो वज़ीरिस्तान में लोग जमा होते थे ये सब 10-10, 5-5, 20-20, 50-50 तक एक जगह गपशप लगाते उसकी भी खौफ न था अपने दरमियान में मोहब्बत है जब ये लूनाटिक शुरू हो जाए और शुरू हुए इसी वजह से आज उस सारी जिंदगी बल्कि हमारे मैं खुद अपने घर में कभी कभी रात नहीं गुजारा हम पहाड़ों में रात गुजारेंगे क्योंकि डरते हैं कि ऐसा न हो कि हम पर भी मिसाइल कहेंगे. The life used to be very different for drones. People would be getting together in a bigger congregation and there was much more love within the community and there would be 40 or 50, 60 people gathering on any occasion and discussing things and having a good time together. But since now drones, there are no bigger gatherings. People don't gather around. I myself at times just go to mountains and just stay away when there is more concentration of drones in my area. I try to be alone and away. इससे पहले हमारी जो शादी होती थी तो उस वक्त हम ढोल बजाते थे सारे लोग गाँव के लोग इकट्ठा होते थे अपनी शादी में हमारी सकाफत को बहुत नुकसान पहुँचा इस वजह से ड्रोन अटैक की वजह से हम शादी इस तरह नहीं कर सकते जब पहले करते थे और हम पहले फातवानी के लिए तकरीबन 10-15 दिन बैठते थे जब कोई मुद्दा वगैरह होता था अब फातवानी के लिए एक जगह नहीं बैठ सकते कोई शादी की तकलीफ नहीं जा सकता और नहीं ये फातवानी वगैरह नहीं जा सकता ये हमारी सारी जिंदगी की मामला. Other thing which has been affected by drones is our culture because our weddings were very different before. There used to be drum beating and gathering of people, big gather of people. People, men would be dancing the different type of Pashtun dance as well, but now that has completely changed. Weddings are just smaller number, and funerals have changed as well because according to our tradition, after someone's passing away, we will be gathered at that person's house in a bigger number for many days. But now that doesn't happen because funerals are being targeted as well. So if someone dies in a drone strike, is funeral, and by funeral we don't mean exactly that first congregation. According to custom, people keep visiting the house. So there will be any time this many people present in the house in just the guest room to condole with us. ये भी फर्क आया है कि तकरीबन हर एक घर में तकरीबन रोजाना 2-3 बंदे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टरों से टेंशन की गोलियां प्रोटाइडिन जिनेक्स ये वगैरह गोलियां लेते हैं ये क्या नाम है इसका ये गोलियां लेते ये मेडिकल स्टोर और डॉक्टर अक्सर लोगों को ये दवाएं तजवीज़ करते हैं क्योंकि ज़हनी मरीज बनते हैं. The second thing which has changed in society is the use of these drugs like Xanax and Prozac, which are basically Lexotanil. One is Xanax, Prozac, Lexotanil, Xanax, Prozac. Prozac is P-R-O-P-H-D. And tramadol. D-I-E-N. These are all antidepressant. And there's more use of these drugs in that area since drones. There was still a question about where they live. Oh yes, I just was wondering because it looked to me
when I looked at the map, like it's a very small area. And when I talk to people actually about the drone strikes, I say to people, what if it was just in your own county that's a small subdivision of the state? Because that is what it appears to be that they're attacking. And so I was wondering if that is accurate. I didn't understand the question. Oh, sorry. I said I looked in the area where the drone strikes are is quite small by the standards of like where I live, and that and I wondered if he lives right in that area, and that if I'm accurate, that it is quite a small area. And I understand they probably don't drive around as much as we do, which would make a little difference. But even so, it seems to me quite terrifying that it's such a closed, a small space that these attacks are happening. Specific targeted areas. मैप में देखते हैं कि एरिया में जो ड्रोन ज़्यादा हमले करता है तो थोड़ा सा एरिया है सारा, उस एरिया के अंदर जितने ज़्यादा ड्रोन हमले हो रहे हैं वो एरिया तो बहुत छोटा था। इस तरह से नहीं जैसे मिसाल तो जिस शहर से मैं आई हूँ वहाँ पे तो बहुत बड़ा शहर है। अगर मिसाल तो कराची की मिसाल मैं आपको देता हूँ, वहाँ पे अगर मलीर में हमला हो रहा है तो क्लिफ्टन वालों को पता नहीं है, लेकिन मेरी समझ ये है कि वो तो बहुत छोटी सी जगह है, तो इसमें अगर जहाँ पे वो हमें नक्शे में नजर आता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ड्रोन हमले इसका मतलब है तो हर बंदे की ज़िंदगी मुतासर है। मेरा ये समझना ठीक है कि नहीं? नहीं भाई बात इस तरह है सोचना का कि वज़ीरिस्तान के आखिरी बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट एरिया से लगे कचूरी वहाँ से लेके ये शवाल तक इस सारे वज़ीरिस्तान पे ये तकरीबन 3 दिन पहले यही दरखेल पे हमला हुआ, इससे एक हफ्ता पहले शवाल पे हुआ। सारे वज़ीरिस्तान कोई भी इलाका इस तरह नहीं छोड़ा उसने कि उस पर ड्रोन अटैक नहीं हुआ। Da si ubica, no? Su misala ka ta musta dira warala te jali da misala. बिल्कुल वो अक्सर लकमी जो हमारे कैंसर के मरीज भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कैंसर मरीज का नुकसान है कि मेरा कुछ मेरा मरीज उसका सवाल ये था बेसिकली आप इस इलाके में रहते हैं तो बहुत छोटा सा, जिस जगह हम नक्शे में देखते हैं वो तो उससे भी छोटा इलाका है, जैसे बताते नाले है 3-4 इलाके हैं जिससे ऊपर ज़्यादा नहीं सारा वज़ीरिस्तान में He said it's scattered over whole Waziristan. His concentration is not on just some area, but I think the concept of your bigger area and their bigger area is quite different. Okay. It's scattered over whole Waziristan. It's from one checkpost, Kajuri checkpost to the border. Every area has been targeted many times. Terrible. So let's see the show of hands, and particularly people who haven't had a chance to ask anything yet. So any others? We have Toby. Anybody else? Start with Toby and Jim. My name is Toby, and I'm from San Francisco, and I have been one of the ones also that have been involved in protests at military bases for 3 years now. I really think that we need to do that more and more. Our government is becoming an ugly monster of a beast, and we need to work with the military at the bottom and ask for the low-level military to really look into their conscience about this drone warfare. Let me translate that for you. ये कह रहे हैं कि सब पर ये मैंने काफी से काम करते हैं और मैंने काम करती हूँ और ट्रांसमीडियो हमारा जो मुल्क है वो पूरी तरह से इस सारे जंग के अंदर शामिल है और तबाहकारी का है और बहुत बड़ी बहुत बड़ी ताकत बनता जा रहा है। इसलिए मिलिट्री पे छोटे लेवल पे काम करना पड़ेगा, ये छोटा भी कर सकते हैं उसको भी अवेयरनेस करना पड़ेगा कि So, my big apologies for the monster of a beast that we have as a government. And I wanted to let all of you know that on October 29th and 30th, there are hopefully going to be dozens, if not a couple hundred people outside of Deal Air Force Base where they fly drones this month when I get back home. And unfortunately, Imran Khan is coming to San Francisco just a few days before that. Yeah, okay. So lastly, my question is, but I just wanted to let him know that we are going to be there at the end of the month. And we're going to risk arrest. We're going to block the roads
keep the military out of the base so they can't fly drones that day. So anyway, my question is, I'm hearing that many aspects of your life has changed in terms of how you practice weddings and funerals and social gatherings. Now, what about the jirgas? Because I know that's an important part of your society. How has that been affected? जुटाई था हमारे दरोगे के पत्रकार जैसा पंजाब में से उनका उनका जस्टिस वहाँ पे मामले पता है जब के पर हम ऐसे वाले करने के लिए कि जनाजे थे और शादी होकर और जल के पे सब कुछ पर हम ऐसा कोई चीज भी बाकी नहीं है फिर हमने तो चार दो सारे जितने मुतफिक कर दिया हमारे Jirga is definitely one institution which has been hit. These are Jirga victims. So Jirgas are being hit. There were more than 50 people who were killed. Right, but are they meeting in jirgas in a different way he now? said earlier as well, there's no bigger congregation, but what he said is even more interesting is that nothing is safe from drones. There was one recent attack when they attacked 4 donkeys. So nothing is safe. Could you please, Shahzad? So I'm gonna, we've got to let other people, I know, pose but- some questions, they know we're. I understand that. So we have, because there's another group as well, so. Okay. Oh, yeah, let's talk to them. We can switch this group and bring the other group so that you can continue. We have Noor Behram as well, who is the journalist, photojournalist.